हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र की PYQs हम कर रहे थे। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस के 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा, लोथल, आलमगीर और हुलास। तो इसका आंसर होगा आलमगीर और हुलास, ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगा is in Rajasthan and Lothal is in Gujarat, and Alamgir is situated in the Meerut UP, and Hulas is situated in the Saharanpur Uttar Pradesh, hence option D is correct। तो दो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की सेंटर्स वो उत्तर प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इन गुजरात। तो गुजरात में एक ही है, लोथल। For the Harappan culture sites and the position of its, which of the following is not correctly matched। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगिरी राजस्थान में नहीं है, ये रॉन्ग होगा। राखीगिरी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। तो राखीगिरी विलेज इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा along the bank of Hakra rivers, rest option is correct। Eastern boundary of Harappan culture is indicated by which of the following। तो ईस्टर्न बाउंड्री हरप्पन कल्चर की इंडिकेट कर रही है, तो ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीर होगा उत्तर प्रदेश में। ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हरप्पन कल्चर इज इंडिकेट आलमगीर उत्तर प्रदेश मेरठ। वेस्टर्न बाउंड्री इंडिकेट सुल्तानगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। Northern boundaries by Monda Jammu and Kashmir, and southern boundary is Daimabad महाराष्ट्र। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बारे में, हरप्पन कल्चर की जो बाउंड्रीज है उसके बारे में पूछा था। ये UPSC प्री 2023 में ही आया था। फॉर इम्पोर्टेंट मैच लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग्स। हरप्पन साइट एंड लोकेशंस। तो मांडा कहाँ पे मैच होगा? मांडा जम्मू कश्मीर में होगा, दैमाबाद महाराष्ट्र में होगा, कालीबंगम राजस्थान में होगा, राखीगढ़ी हरियाणा में होगा। सो ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा। और ये हमने अभी पहले भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हरप्पन साइट्स एंड स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडियाज। बालू, मांडा, पादरी, हुलास। हुलास तो हमने पहले ही देखा है, हुलास उत्तर प्रदेश में होगा, और मांडा जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, बालू हरियाणा में हो गया, और पडरी गुजरात में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स कल्चर इज लोकेटेड इन सिंध। तो सिंध में कौन से हरप्पन साइट लोकेटेड हैं? वो हैं मोहनजोदारो एंड चाहुंदारो। अमंग द अबव ऑप्शंस, हरप्पा इज लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदारो एंड चाहुंदारोस बोथ आर लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, एंड सुरकोटादा is located in Gujarat। Mohenjo-daro is situated which of the following? Gujarat in the state of India, Punjab in the state of India, Sindh province in Pakistan और अफगानिस्तान। तो सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान ये मोहनजोदारो सिचुएटेड है, वो अपने देश में नहीं है मोहनजोदारो। द एक्सकवेशंस एट चाहुंदारो इज डायरेक्टेड बाय। तो चाहुंदारो का एक्सकवेशन किसने डायरेक्ट किया था? तो J.H. Mackay। The ruins townships of Chaundaro is situated near the 130 km south of Mohenjo-daro। Was discovered by N.G. Majumdar in 1931, excavated on a large scale of E.J.H. Mackay 1935-36। Mackay found bead making factories and furnaces here. Some phases cut bricks were found at Chaundaro।
Which sites of Indus Valley is in now Pakistan? कालीबंगा, हरप्पा, लोथल, आलमगीर। तो इसका आंसर तो हरप्पा ही होगा। हरप्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ Montgomery districts of Punjab province, now in Sahiwal district of Punjab. It is located on the bank of river Ravi. Kalibanga is located in Hamargarh district of Rajasthan. Lothal is Gujarat. Alamgir is उत्तर प्रदेश। तो हरप्पा जो है वो पाकिस्तान में है, कालीबंगा तो हमने राजस्थान में देख लिया, लोथल गुजरात में हो गया, आलमगीर हमने पढ़ी लिया उत्तर प्रदेश। तो 41 Rangpurs where the contemporary of the Harappan civilizations is found is in Saurashtra। तो इसका आंसर सौराष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर सी। रंगपुर इज लोकेटेड इन द सौराष्ट्र रीजन of the western India on a coast of Arabian Sea in Gujarat. On the basis of large vegetative remains, it can be said that these peoples used to cultivate rice, bajra and sorghum. The Dheri is the late Harappan sites. हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो द ढेरीज, इसका आंसर होगा बी। ढेरीज was a prehistoric excavation sites of Govindgarh district of Fatehgarh Sahib, Punjab. The Dheri is known for its painted grey ware cultures, which is supposed to associated with the arrival of the Aryan. तो द Dheri is late Harappan site कहाँ पे है? पंजाब में। नेक्स्ट 43 विच साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? हरप्पा, मोहनजोदारो, ये दोनों तो पाकिस्तान में। तो लोथल है, लोथल होगा इसका आंसर। लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सारगवालास इन ढोका तालुकास इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. It is situated on the bank of Bhogwa river. It was discovered by S.R. Rao in 1954. Harappa and Mohenjo-daro are situated in Pakistan. The Harappan city is represented by the archaeological sites of Lothal was situated on the river. तो Lothal is situated on Bhogwa river, अभी हमने ऊपर पढ़ा, नर्मदा, माही, भोगवा एंड भीमा. तो Lothal is situated on the Bhogwa river. Harappan civilizations, Lothal is located to Gujarat. The port cities of Indus Valley civilizations, Lothal. Port city of Indus Valley civilizations, Lothal होगा. Lothal is one of the only place of Indus Valley civilization which were the pieces of evidence of port have been found, which is located on the east of the city. 47. Which of the following is the Harappan port? Alexandria's, Lothal's, Mahasthangarh, Nagapattinam. To Lothal. What is the most significant features of Indus Valley civilizations? Burnt brick buildings, first true arch, buildings of worships, art and architecture. तो इसका ई ऑप्शन होगा. The uses of burnt bricks in constructions of buildings was one of the main features of Indus Valley civilizations. The burnt bricks were used in abundance in Harappan and Mohenjo-daros. In Lothal, burnt bricks were used in construction of drainage and well-planned architectures. Advanced trades and commerce were other main feature of the civilization. तो काफ़ी डेवलप सिविलाइजेशंस थी उस टाइम की. तो इसका ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव. At which of the following Indus Valley site was a terracotta replica relating to explorations of plough discovered? Dholavira, Kalibanga, Rakhigari, Banavali. So according to the Archaeological Survey of India, terracotta plough along with plough fields have been found from the early phase of Kalibangan site, Rajasthan. Apart from these terracottas,
plow have also been discovered in the Indus sites named Banawali located in Fatehabad district, हरियाणा। तो इस वजह से इसके आंसर में कंफ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों जगह मिली हैं, लोथल में भी, अरे कालीबंगा में राजस्थान में भी, और बनावली हरियाणा में भी। Which among the following Harappan sites is terracotta plough fields was? बनावली, धोलावीरा एंड कालीबंगास। तो इसका ऑप्शन अभी आपने देखा, कालीबंगास राजस्थान में होगा और हरियाणा भी होगा, हो सकता है बनावली हरियाणा भी। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आप एक्सप्लेनेशन फिर से देख सकते हैं। Which of the following is not an Indus Valley civilization sites? कालीबंगा, पाटलिपुत्र, रोपर, लोथल। तो कालीबंगा, रोपर, लोथल ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कौन सी नहीं है? पाटलिपुत्र, ये नहीं है। कालीबंगा, रोपर एंड लोथल so related to Indus Valley civilization, but Patliputra is adjacent to modern day Patna, is not associated with the Indus Valley civilization. The largest sites of Harappan in India is राखीगढ़ी। तो आलमगीर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट्स है इंडिया में। द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया इज़ राखीगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार, हरियाणा। हिसार में है, हरियाणा के सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट। द बिगेस्ट हरप्पन साइट इज़ इन इंडिया, तो अभी हमने पढ़ा राखीगढ़ी। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन बैंक ऑफ द रिवर्स देवर, इंडस, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस किस रिवर के पास है? तो सिंधु, झेलम और चेनाब के पास है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा, फोर्थ नहीं होगा। और सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Geographically, Indus Valley civilizations was spread from Jhelum River to Hindon rivers, a tributary of Yamuna River. In South Alamgir, it consists river like Chenab, Ravi, Satluj and Jhelum, but Ganga is not belongs to this. The people of Indus Valley believed in spirits and Brahma, rituals, sacrificial systems, mother goddess. Undeciphered scripts of Indus Valley civilization has attracted speculation and hypothesis. The people of Indus Valley civilizations probably worshipped Mother Goddess Lord Shiva. They may have performed yagya, fire pits found in Rajasthan and Gujarat sites. Burials rituals indicates belief in atmas or spirits. Evidence of human sacrifices were also found in Mohenjo-daro. The Indus Valley peoples worshipped Shiva. So Marshall identified the figures which found during the excavation of early from the Hindu gods Shiva or Rudra or Pashupati, lord of animals, from the excavation of Harappa. The Pashupati scenes in which three-faced male god is shown sitting in a yogic posture, surrounded by the rhino and buffalo on the right sides, an elephant and tiger on the left sides, make the historians conclude that peoples of those days worshipped Lord Shiva, or cylindrical stones showed that the people worshipped Lingam, the symbol of Lord Shiva. तो इंडस वैली के पीपल, वहाँ के रहने वाले लोग किसकी पूजा करते थे? तो शिवा की पूजा करते थे। ये सब एक्सकवेशन में हमें मिला हुआ है। Which was the director of archaeological excavations that led discovery of Harappan and Mohenjo-daro? Lord Macaulay, John Marshall, Clives and Colin Todd. तो किस डायरेक्टर के अंडर में ये सब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ था? हरप्पन एंड मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ था। तो सर जॉन मार्शल was the Director General of Archaeological Survey of India in 1902 to 1928. He appointed Mr. Dairam Sanis, who carried out excavations in the Sahiwal districts of Punjab province, Pakistan, on the left bank of the Ravi rivers. Mr. Sahani excavations leads to findings ruins of Harappas in 1921.
Mr. Rakhaldas Banerjee dug out the ruins of the city of Mohenjo-daro, Larkana district of Sindh province in 1922. So 58 questions. Two Indians who were associated with discovery of Indus Valley civilizations. अभी पढ़ा हमने रखेल दास बनर्जी and Dayaram Sahani. Which one of the following is not correctly matched? हरप्पा दयाराम साहनी सही है. लोथल एसआर राव सही है. सुरकोटादा जेबी जोशी ये भी सही है. और डी ढोलावीरा बी के थापर ये रॉन्ग है. The Harappan site was excavated by Dayaram Sahni, Lothal was S.R. Rao, and Sukratodas by J.P. Joshi. But Dholavira not excavated by B.K. Thapars. Instead, it was excavated by R.S. Bhist. तो ढोलावीरा को R.S. Bhist ने एक्सकवेट किया था. ढोलावीरा गुजरात में है. The first archaeologist who excavated Harappa's but could not recognize its significance was A. Cunningham. Alexander Cunningham, who headed the Archaeological Survey of India, visited these sites in 1853 and 1856. Sir A.D. Cunningham made few small excavations at the site and reported some discoveries of the ancient pottery, stones, tools, and stones seized, but did not recognize its significance. Hence, option A is correct answer. Who among the following was not associated with the Harappan excavations and Mohenjo-daro? कौन इन दोनों हरप्पन और मोहनजोदारो से रिलेटेड नहीं है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वट्स एंड वी एस स्मिथ. तो इसका आंसर डी होगा, वी ए स्मिथ. In 1921, Dayaram Sahani's excavated Harappa. From 1926-27 to 1933-34, MS Bus were associated with the excavation of Harappa. Mohenjo-daro was excavation done in 1922 by Rakhaldas Banerjee. In addition to him, some other scholars like K.N. Dikshit, Ernst Mackay, Oral Steens, and A.S. Ghosh, J.P. Joshi also contributes in discovery of the civilizations. Hence, it is clear that V.A. Smith is not associated with the discovery of Harappan civilization rather than Irish Indologists and historians. 62. Who among the following discovered Surkotada's sites of Harappan cultures? B.V. Lal, S.R. Rao, Y.D. Sharma या जगपति जोशी? तो सुरकोटादा को किसने डिस्कवर किया था? जगतपति जोशी. Surkotada is situated in Kutch district of Gujarat. It was discovered excavated by Jagpati Joshi. From which one of the following places remains of wells have been found in a house belonging to the developed stage of Indus Valley civilizations? Harappa, Kalibangan, Lothals, and Mohenjo-daro. Remains of wells and bathrooms have been found in approximately every major sites of Indus Valley civilization. कोई इसका एक नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शंस दिया नहीं है. तो हर जगहों पे हरप्पा हो, चाहे कालीबंगा हो, लोथल हो या मोहनजोदारो, सब जगह वेल्स, बाथरूम्स, कुएं और बाथरूम्स मिले हैं. जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी वहाँ पे सब जगह पे ये मिला. क्वेश्चन 64. What is the correctly or chronological order in which the following appears in India's gold coin, punch mark, silver coins, iron plows, urban cultures? So सबसे पहले urban cultures, फिर iron plow, punch mark coins and gold coins. Harappan civilization is most ancient civilizations.
in India is a famous for town plannings. Indus Valley civilizations are Bronze Age civilizations. The knowledge of iron was known much later after Bronze during the post-Vedic periods around 1000 BC. The first punch-marked coin into existence in India during 7 to 6th century BC. Gold coins were introduced Indo-Greek rulers during the 2nd century BC. So options डी होगा इसका. सबसे पहले अर्बन कल्चर दिखा, फिर आयरन प्लाव, फिर पंच मार्क कॉइन, फिर गोल्ड कॉइन्स. सो क्वेश्चन 65 पे देखते हैं. द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन वाज, पहला मेटल कौन सा यूज़ किया था इंसानों ने? कॉपर का यूज़ किया था सबसे पहले. सो ऑप्शन सी होगा इसका. कॉपर वाज द मेटल्स विच was first used by humans, though there is a variations in the periods around the globe as far as the use of copper is concerned. Question 66. An average scales in Harappan context was found. कालीबंगास, लोथल, धोलावीरा एंड बनावली. तो इसका होगा लोथल्स. An average scales in Harappan context was found. Lothal. An average scales in the Harappan context was found at Lothal. Lothal is a place associated with Indus Valley civilization currently in Gujarat. Question 67. Which metals has so far not been discovered in Harappan sites? तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर्स को डिस्कवर कर लिया गया था, बट आयरन्स नॉट. Harappan civilizations also known as Bronze Age civilizations. From here, pieces of gold, silver, copper, and brass has been found, except irons. In fact, the peoples of Harappas were not aware of irons. In India, the beginnings of Iron Age is considered to be the later Vedic periods. तो later Vedic period के बाद हम आयरन को माना जाता है, कंसिडर किया जाता है. और उस टाइम हरप्पन टाइम्स गोल्ड, कॉपर और सिल्वर मिले थे और आयरन नहीं मिला था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ कग्गर्स एंड इज एसोसिएटेड विथ रिवर? तो बनावली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली civilization period in Fatehabad district, Haryana. Banawali is located in the valley of Ghaggar and its tributary. Hence option D is correct. Question 69. Consider the following statements and select the correct answer from the given quotes. Mohenjo-daro, Harappa, Ropar and Kalibangas are the main sites of Indus Valley civilizations. Peoples are Harappa develops the roads, proper housings and drainage systems. People are Harappas were unknown about the use of metals. तो इसमें से केवल फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है. हरप्पा, मोहनजोदारो, रोपर, लोथल्स आर and Kalibanga are the main sites of Indus Valley civilization. In this civilization, most of the cities were designed in a grid patterns of proper drainage systems aligned along with the roads, which was covered with the big stones and bricks. The form of art were found from the various sites of the civilization, including seals, potteries, golds and ornaments and necklaces. Next questions 70. Assertions and reasons. Assertions: Mohenjo-daro and Harappa cities are dead now. Reason: they were discovered during the excavation in the context of the above. Which one of the followings? Both A are true, R is correct explanations. Both A are true, R is not correct explanation after A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो इसका both सही है.
A और R ट्रू है, बट R इज नॉट करेक्ट टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा. मोहनजोदारो नाउ इज इन पाकिस्तान इन दरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस on the right bank of the river of Indus River. Harappa is located in the Sahiwal districts of Punjab province, Pakistan. Dakhaldas Banerjee and Dayram Sani were the two archaeologists who excavated the two major cities of Indus Valley civilization. At present, these towns extinct. Therefore, assertion A and reason R both are correct, but the reasons not correct explanation. Therefore, option B is correct. 71. From where the evidence of rock cuts architecture was found with reference to Harappan civilizations. कालीबंगा, धोलावीरा, कोट दीजी अम्बरी, तो इसका होगा धोलावीरा. तो धोलावीरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आफ्टर राखीगिरी. is located in the run of Kutch, Gujarat. R.S. Best and its collections excavated in 1992. Dholavira is one of the most prominent archaeological sites of Harappan, which gives us important information about the Great Baths and rock cut reservoirs, which was 7 meters deep and 79 meters long. 72. Dholavira is located in the states. अभी पढ़ा है धोलावीरा गुजरात में लोकेटेड है. Which Harappan city is divided into three parts: Lothal, Kalibanga, Dholavira, Surkotoda. So Dholavira is Harappan city is located in the Kutch district of Gujarat. The town was built in rectangular shapes. It was divided into three parts: Citadel, Middle Towns and Lower Town. तो धोलावीरा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये गुजरात में लोकेटेड है. फर्स्ट पार्ट को सिटाडेल कहते हैं, दूसरे पार्ट को मिडिल टाउन कहते हैं और सबसे लास्ट वाले को लोअर टाउन कहते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिमेनेंट्स ऑफ थ्री टाउनशिप्स हैज़ बीन रिवील्ड? मोहनजोदारो, संगहोस, कालीबंगन्स, धोलावीरास एंड. तो अभी हमने देखा कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया तो वो था धोलावीरा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज़ वेल नोन फॉर इलेबोरेट system of water harvesting and management buildings, a series of dams and channelizing waters connected reservoir. तो कौन सी साइट ऐसी थी जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट्स का बहुत अच्छी प्रबंध था? एंड सो सबसे कौन सा शहर था जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए था? तो वो धोलावीरा था. धोलावीरा इज गुजरात इज़ वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग वाटर्स इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर. द हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफ हरप्पन्स टाइम्स वाज अंडर अर्थ एट धोलावीरा. अभी हमने पढ़ा. फ्रॉम धोलावीरास अ ह्यूज रॉक कट रिजर्वायर इज फाउंड whose size is about 80.4 meter into 12 meters and 7.5 meter deep, having a huge capacity of store waters. People of Dholaviras were familiar with the advanced water management systems. It is the earliest evidence people used to store water in this system reservoirs by building dams. Which of the following sites yielded evidence of double burials? तो कौन सी साइट्स थी जहाँ पे डबल बरियल मिलता है? तो द एविडेंस ऑफ थ्री डबल्स burials has been found from Lothal. It was important sport of Harappan culture. The evidence of double burial has been found from Kalibanga and Rathal and Rakhigari. तो थ्री डबल burials has been found तो लोथल था. और द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ हरप्पन कल्चर्स, द एविडेंस ऑफ डबल बरियल आल्सो फाउंड इन द कालीबंगा राखीगिरी. तो लोथल में भी कहा जा सकता है, कालीबंगा में भी कहा जा सकता है और राखीगरी में कहा जा सकता है. यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट, रिसेंट्स फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पन साइट्स
सोनौली व्हाट वाज फाउंड्स। तो जो हरपन साइट सोनौली तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, ह्यूमन बरियर्स, एनिमल बरियर्स, रेसिडेंट्स, बिल्डिंग्स, प्रोटेक्टिंग्स वॉल्स। तो हमें ह्यूमन बरियर्स मिलता है। सोनौली इज इन चर्चगढ़ का साइट इज लोकेटेड इन बरूद तहसील बागपत districts Uttar Pradesh, where 125 graves belonging to Indus Valley civilizations were found. 3 graves were oriented in north-south direction, and the most are identified as primarily human burials. Some of the burials were found with animals' bones and gold, copper, and bangles. Question 79. In which states of the India's is the Harappan site Mandi situated? तो मांडी situated in गुजरात, अरे सॉरी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मांडी is situated in the उत्तर प्रदेश. Mandi is a village of the Muzaffarnagar district of Uttar Pradesh. It becomes famous for discovery and loot of the ancient treasures proved by villagers. In June 2000, as per the ASI, the jewelry found belongs to late Harappan period. Question 80. For clothing, cotton's cultivations was the first introduced Egypt, Mesopotamia, Central Americas, India's. तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था कॉटन कल्टीवेशन और क्लॉथिंग, तो वो इंडिया में था. Cotton was first cultivated in India for clothing. In 1922, Rakhal Das Banerjee took interest in the site of Mohenjo-daro for the excavations. Evidence of the earliest cotton cultivations was found by the excavation in India. From India, it reached Greece, where it was called Sindom. The cotton cultivations in India started in 3000 BC, while it was cultivated in Egypt in 2500 BC. Question 81. Which of the following characterize and the peoples of Indus Valley civilization? They possessed great places and temples. They worshipped both male and female deities. They employed horse-drawn chariot in warfare. So option only 2 is correct. They worshipped both male and female deities. No temples or a place worships has been found in excavations of Indus Valley civilization till date. The only religious source for civilizations is statues made mud and stones, and seals which were found here. By this it is known that female deities Shiva or Pashupati and animals like snake, elephants were worshipped. Worships of plants and trees or inanimate stones or other objects in the form of lingas or yoni symbols were famous during the periods. Question 82. Regarding the Indus Valley civilization, considered the following state. It was predominantly a secular civilization, and the religious elements through presence did not dominate the scenes. During this period, cotton was used for manufacturing textile in India. So both option is correct. Indus Valley civilization considered as a secular civilization with no trace of theocratic and organized religions. Cotton textiles were produced during the Harappan periods as shown by artifacts evidence. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो सेकुलर सिविलाइजेशन थी और इस पीरियड में ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन्स इन सब का होना शुरू हुआ. One of the following, question 83, one of the following sites from where the famous bull seals of Indus Valley civilization is found. हरप्पा, लोथल, मोहनजोदारो, चाहुंदारो. तो इसका मोहनजोदारो होगा. मोहनजोदारो is an archaeological site in the province of Sindh, Pakistan, excavated by the R.D. Banerjee in 1922.